evening. Hello, dear students. How are you? Welcome to yet another session by super grads from top rankers. Many students have this query, why grammar? As I've already explained, grammar is the base of the language, and it makes sense to work on the base so that we are able to express our ideas coherently, concisely, precisely, clearly, right? And from the examination point of view also, grammar per se is asked in many exams. And there are certain exams in which there are subjective writing questions such as essay writing. So we should never lose sight of the rules of grammar, and we should always work laboriously towards the improvement of our grammatical structures. And you will be amazed to see that if you work regularly, your grip on grammar improves every day. And today we are going to actually briefly touch upon a topic which is called adverbs. Adverb is the part of speech. It is one of the 8 parts of speech which we had done in the last session. Do you remember them? There are 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. So what it does, let's take this further. An adverb is that part of speech which tells us how an action is performed, because it basically tells about the verb. It gives us additional information about the verb. Verb is nothing but the action or the state of being. Now, you will be surprised to know that apart from modifying or changing verb, it also modifies another adverb, and it also modifies an adjective. So if you can recall the parts of speech which we had done in a nutshell in the previous session, you will be amazed to see how adverb works upon these also. So an adverb is a word. What is it? That describes a verb, how the action has been performed, right? An action has been performed, but how? In what manner? That is being told to us by adverb. It is a word which answers the question when, how, why, where, how often, and how much in a sentence. So clearly, it gives us more information, it makes the information clearer, and it enriches the language, thereby improving upon our communication skills. We all want to be heard correctly. We all want to be listened to, okay, attentively by everyone. And that is why we need these parts of speech in detail. So an adverb modifies a verb. What is to modify? Modify is to change, and change is sometimes for the better. So it changes, it gives a definition to the verb, it gives additional information, and also to an adjective or another adverb. Let's see how. Let us take some examples. The boy ran speedily. Now, here it's very clear that the boy is the noun or the subject of the sentence. The verb is ran. Ran. And what is speedily? Speedily is the adverb which tells us about the action of running. How did the boy run? Slowly? Hastily? How did he run? He ran speedily. That means he ran fast. Now, please don't make this mistake, my dear students, of saying he ran fastly. Fastly. How many of you use this word? Fastly. We'll come to this in the latter half of the session. We'll see which are those mistakes which are generally committed by all of us. Next, the princess wore a very beautiful gown. Now look at the sentence. Where is the noun? This is the noun, the princess. Okay, this is the verb wore, and this is beautiful gown. Here, please understand that beautiful is an adjective.
which gives us more information about the noun gown. And what does this do? Very, very is an adverb which tells us more about the adjective. So here, this adjective, beautiful, is being given more prominence or more definition by the verb, by the adverb very. Okay, so very is an adverb just as speedily is an adverb. Look at the third example. I lost my wallet yesterday. What is a wallet? Wallet means your purse in which you keep your money or other important documents, cards, etc. Right? So I lost. Lost is the verb. My wallet is the object of the sentence, which is also a noun. And yesterday. Yesterday. When did this happen? Yesterday. ये lose कब हुआ? कब मेरे से मेरा गुम हो गया? मेरा पर्स कब गुम हो गया? Yesterday. कल. Okay. So this is telling us about when. This is telling us about when. Okay. Look at the fourth example. He always tries to do his best. He always tries to do his best. Tries is the verb. Okay. It is telling this always is telling us how often, कितनी बार, क्या वो हमेशा करता है? Yes, he always tries to do his best. या वो sometimes करता है, you know, कभी कभी करता है, हमेशा करता है, usually करता है, regularly करता है, generally करता है, normally करता है, ठीक है? He always tries to do his best. Look at the fifth example. My brother is quite happy. Now, happy is nothing but adjective. Okay? My brother is happy. But by using quite, by adding quite, we can say that he is happy to some extent. What does quite mean? To some extent. Some extent. किसी हद तक. Okay? Now, please look at the difference between quite and quiet. There are two words in English which have a different meaning, but generally we find people getting confused. Quiet is somewhat, look at the spelling, Q-U-I-T-E, quiet. And what is this? This is pronounced as quiet, quiet, silent, शांत, calm, है ना? जो धीरे, जिसको हम कहते हैं ना साइलेंट, स्वभाव से जो शांत है, उसको आप बोलते हैं quiet. कभी कभी हम कहते हैं she sat quietly, वो शांति से बैठी थी. It was a quiet evening. Okay? और ये क्या होता है? Quiet to some extent. My brother is quite happy. Look at this. The army marched forward. The army is the noun. March. What is to march? March is to go ahead. To go ahead in the direction which is being told to them. So forward. What is the direction? Forward. So what does it tell us? It tells us which place. Okay, where? It tells us where, right? So in this manner, we see that adverbs come to our help when we want to give meaning or understanding in detail. So at that time, the adverbs come to our help. So let us summarize. What is the definition? What function does the adverb do? An adverb, from the name itself, it is clear. Add verb. Okay, you can just make this connotation something which is added to the verb or something which gives us more information about the verb. So it tells us more about verb. It tells us more about adjective. It also tells us more about another adverb, right? So in this way, we find that adverbs give richness to the language, making things clearer and well defined. Now, let us see how many types of adverbs are there. Let us see the types of adverbs. I have given you a general introduction in the previous slide. Now, let us go deeper in it. Okay. So, first of all, let us study the adverb of time. Adverb of time. As the name itself suggests, it tells us, है ना, time, कब हुआ, वो action कब हुआ, कब. वो याद रखिए आप, कब, क्यों, कहाँ, ठीक है? You will be able to remember. So, the train arrived early. When did the train arrive? How did the train arrive? Did it arrive late?
नो. इट अराइव टाइमली? नो. इट अराइव्ड अर्ली. पहले आ गई, समय से पहले आ गई. ठीक है. नेक्स्ट, आई शैल मीट द प्रिंसिपल टुमारो. व्हेन शैल आई मीट द प्रिंसिपल? टुडे. शैल आई मीट द प्रिंसिपल नेक्स्ट वीक? Shall I meet the principal day after tomorrow? No, I shall meet the principal tomorrow. So ये action जो है of meeting the principal, ये कब हो रहा है? It is happening tomorrow. So see, that is what I am repeatedly telling you, that adverb gives us more knowledge, more information about the verb, how the action took place, right? Now the next variety or the next type or the next category of adverb is मैनर. मैनर, मैनर कैसे? मैनर का एक और आप मन में रखिए, ध्यान रखिए, हाउ. ठीक है. ये कहां से, एडवर्ब ऑफ टाइम से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? when. और एडवर्ब ऑफ मैनर से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? हाउ वॉज द एक्शन परफॉर्म्ड. ठीक है. लेट अस सी द डिटेल्स. The soldiers fought bravely. Look at the example. The soldiers fought bravely. How did the soldiers fight? Bravely. Okay. Bravely is an adverb which tells us more about the verb fought. Fought is the past tense of fight. Fight, fought. फाइट आपको पता है, लड़ना. कैसे लड़े? सोल्जर्स कैसे लड़े? ब्रेवली लड़े. नेक्स्ट, माय टीचर स्पोक स्ट्रिक्टली. हाउ डिड द टीचर स्पीक? डिड शी स्पीक जेंटली? नो. डिड शी स्पीक लविंगली? नो. हाउ डिड शी स्पीक? शी स्पोक स्ट्रिक्टली. है ना. स्ट्रिक्ट तरीके से टीचर ने हमसे बात की. ओके. सो ये जो एक्शन है स्पोक, इट इज बीइंग डिफाइंड बेटर इन अ बेटर वे with the use of the adverb strictly. Next is adverb of place. Place मतलब कहाँ. Okay. Where. You can relate this adverb with where. Where did the action take place? अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो, she went downstairs in search of the camera. Did she go out of the house? No. Did she go to the terrace? No. Where did she go? She went downstairs in search of the camera. कैमरा ढूंढने के लिए वो कहाँ गई? She went downstairs. Look at the next sentence. Please go back. Back. Okay. Let us take another example. Stop there. There's an instruction. Stop there. वहीं रुक जाओ. My dear students, it would do you good if you started preparing your notes. So you should always be writing things along with me. Alongside of me, you also write your own examples so that things are clearer to you. Okay. Let us take some more examples in this adverb of manner so that things are clearer. I am taking one more example for the adverb of manner. The student looked at me doubtfully. The student looked at me doubtfully. How did the student look at me? Doubtfully. Adverb of manner. Next. So these are the three types of adverbs we have done. We have done adverb of time, we have done adverb of manner, and we have also done adverb of place. Now let's see which other categories of adverbs are there. Next is adverb of degree. This degree is not some achievement, that you get in a college. वो degree नहीं है ये. Degree, you can, relate it with, for example, the state of being. है ना? Suppose you are suffering from fever, right? So what happens? The doctor or your mom checks your temperature, है ना? तो temperature check करके क्या देखते हैं वो? कितना, right? कितना fever है? Degree. Can you recall? Try to connect ideas, dear students, so things become clearer for you. So adverb of degree, how much? You are pretty good at maths. यहाँ पे pretty का मतलब beautiful नहीं है. Please don't think that pretty here means beautiful. Pretty here means quite good.
to a great extent. You are pretty good at maths. Sometimes a teacher tells you you are pretty good at physics. She is pretty smart. आपने सुने होंगे ऐसे words. She is pretty smart. मतलब quite smart. My mom is pretty old. काफी aged हैं. Okay, pretty. So pretty means to somewhat. So it is the adverb of manner. How much? I'm sorry, adverb of degree. Please pay attention. This is adverb of degree. Next, Monty looks rather sad. Rather, Monty looks rather sad. Somewhat. Rather tells us somewhat. How much? Somewhat. कितना? So degree, है ना? Does he look very sad? No. Does he look extremely sad? No. Then how much sad does he look? He looks rather sad. थोड़ा बहुत. Okay. Now generally, my dear students, this adverb rather is used in a negative connotation. Generally, it has a negative meaning. Suppose I say the weather is rather cold. Please take this example. Please understand this. The weather is rather cold. मीनिंग क्या है? आज मौसम ठंडा है. ओके, द वेदर मौसम इज रादर cold. Now, what does it rather signify? This rather. Does it tell us that the speaker is happy? क्या हम बोलने में खुशी महसूस कर रहे हैं? Yeah, the speaker is not happy about it. Yes, you guessed it right. The speaker is not happy about it. He says the weather is rather cold. Okay, rather is generally used for those situations where we want to show negativity. We are not very happy about that. तो फिर positive show होने के लिए what is the adverb? This question will come to your mind. There is another adverb called fairly. Fairly means towards the positive side, towards the better extent. If you are the students of algebra, you have been doing the करते हैं ना नंबर लाइन. ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. जीरो से पीछे जाते हैं, सो यू गेट इन माइनस, -1, -2, नेगेटिव. ओके, और अगर हम पॉजिटिव साइड में जाते हैं तो +1, +2, इस तरीके से. सो फेयरली इज यूज फॉर पॉजिटिव थिंग्स. सपोज आई से ऑलरेडी मैंने गुड ही कहा है ना. ओके, शी इज फेयरली गुड. मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट हर बीइंग गुड इन एन एप्रिशिएटिव मैनर, इन अ प्रेजवर्दी मैनर. हम उसको अच्छे से जोड़ के देख रहे हैं. अगर इसी को लिख देते द वेदर इज फेयरली कोल्ड, मतलब वेदर तो वही है. Okay, but the speaker's feelings, the speaker intentions are good about it. He is happy that the weather is cold today. He had expected a cold weather and he has seen when he got up in the morning that the weather is quite cold. Or opposite to this, अगर rather की बात करें, so the speaker or the writer had expected a sunny weather or maybe a hot weather, और वहां उसको coldness दिख गई. So please understand this is a minute difference between fairly and rather. So fairly हम कहाँ बोलते हैं when we want to talk about the positive things, और rather कहाँ बोलते हैं when we want to talk about the things towards the negative side. So in this way you find that we get different usages of these adverbs. Now coming to the next kind of adverb, which is called adverb of reason. Now what do you understand by reason, dear students? Reason मतलब क्या बोलना चाहिए? कारण, है ना. I didn't go to the party. What was the reason? I was not well. Reason, कारण, है ना. She didn't stand first in the exam. What was the reason? She had fallen ill. समझ रहे हैं? Reason, कारण. So look at the adverb. Hence, I will go ahead of you. Hence proved करते थे ना ज्योमेट्री में, आपने किया है स्कूल में. Hence proved that left hand side is equal to right hand side. So hence, I will go ahead of you. Maybe he is giving the reason, the speaker is giving the reason. This is the reason why I should go ahead of you. Thus, look at the other adverb. Thus, it is impossible to make any changes. Thus, it is
now not possible to make further changes. Maybe it is a plan, it is a program, okay, it is a project, it is a design, okay. So what is the speaker saying? After giving some reason, he's coming to a conclusion. So this is the adverb of reason. Thus, it is impossible to make any changes. You can take some more examples. Therefore, another adverb of reason is therefore. Therefore, he could not enter the house. Therefore, he could not enter the house. Okay, maybe the house was locked from outside. He did not have the key. Okay, maybe there was nobody inside the house who answered the doorbell. So he went outside. He went from outside only. He went away. Imagine the situation. So therefore, he could not enter the house. This is the reason. Are you getting the point? Reason is being told to you through these adverbs, which are the adverbs hence, thus, therefore. Now coming to the next category of adverbs, interrogative adverb. Interrogative, interrogate is to ask a question. Question mark. जैसे ही interrogative आपके ध्यान में आए, आप देखो, so you think about the question mark. Question mark. क्यों? Why? Okay, there is a question. Interrogate, right? So look at the examples. How is your sister feeling? अब आपकी sister की तबीयत कैसी है? How is your sister feeling? Right? अब देखो. Look at this one. Why have you come to the party? You have come to the party. Okay, what is the action? Coming to the party. Why? The interrogative adverb asks the question, why? Can you think of any other interrogative adverb? Kindly give me in the comments. I want, dear students, that you should participate. Okay, that can happen when you write your feedback or your queries or your questions or the answers in the comment box. This way, I will come to know where actually you need support and which are the areas where you want me to come up. Here, I do not want any student of mine to carry a doubt in his mind, okay? Because we at Top Rankers believe in mentorship of the student. The student should not have any doubt and all his or her queries should be allayed, right? We are of the firm belief that we have to support the student community, right? So we will be more than happy if you could post your comments or if you could write your questions which boggle your mind. See, if you ask a question, what happens? There are many students who feel intimidated, who feel scared inside the classroom of asking the question. They feel that others will make them a laughing stock, है ना? Others will laugh on them, laugh at them. ठीक है, वो हंसेंगे. लेकिन if he asks a question and if he gets the answer, so what happens? He becomes the intelligent person, right? Rather than taking the question in your mind and going home without getting its answer, it is always good to stand up and ask your doubt or the question. Okay, you will ask a question and you will get the answer. So, what is actually question making doing to you? It is enlightening you, it is making you more knowledgeable. And a knowledgeable person is a powerful person, dear students. So never hesitate. You put your comments, put your questions in the description box, in the comment box, and then we will be happy to answer your questions. Okay, so here we were at this interrogative adverb, how, why. Can we also ask a question beginning with where? Where is your home? And a question mark. Where is your home? Right? So in this way, we find that we have done all these adverbs. We have done adverb of degree. We have done adverb of reason. We have done interrogative adverb. And then we did adverb of time. We did adverb of manner. And we also did adverb of place. So these are the basic 6 types of adverbs which we need to understand and we need to do.
There are some other forms of adverbs also, to which we will come in the some time later. Okay, when we'll be doing the advanced level of this topic. Now let us examine how are adverbs formed. ये बनते कैसे हैं? How can you make an adverb? Okay, देखो, adverb can be formed by the addition of ली or इली. Take for example the word able. Able से बना ably, ठीक है. और देखो, wise से बना wisely, clever से बना cleverly, bad से बना badly. So ये सब क्या है? Able, wise, clever, ये सब क्या है? They are adjectives. समझ रहे हैं आप? See, आप बना सकते हैं. He is an able artisan. She is a wise lady. बनाइए, सेंटेंस बनाइए आप. He is a clever boy. He she is a bad cook. ये सब क्या है? एडजेक्टिव्स हैं. हमने क्या किया? इनके साथ हमने ली जोड़ दिया. सो एबल के साथ जब हम जोड़ेंगे तो ये ई, अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग रूल, ये ई जो है वो खत्म हो जाएगा एंड इट विल बिकम एबली. शी वर्कड एबली. ओके. वाइज से क्या बना? वाइजली. ही solved the case wisely. Okay. Then cleverly. He freed himself cleverly. कैसे उसने अपने आप को फ्री किया? Cleverly, cleverness से, है ना? तो adverb is cleverly, adverb is wisely, adverb is ably, badly. What have I written? She coughed badly. Cough, खांसना. Some people wrongly pronounce it as cough. No, it is actually cough. How to pronounce this word? Cough. Cough syrup. Don't say cough syrup. No, it is cough. So she coughed badly. ठीक है? Now, some more examples can be taken where illy is used. Pay attention here. Take this adjective hasty. Hasty मतलब fast. Hasty. ठीक है? How do you make the adverb? Hastily. क्या इसका क्या मतलब है? बहुत fast. Okay. Take the adverb, take the adjective gloomy. Gloomy मतलब sad. What is gloomy? Gloomy means sad. So कैसे बनेगा इसका adverb? इसका adverb कैसे बनेगा? Gloomily. Okay. So in this way you find इली लगा के भी आपके क्या बनते हैं? Adverbs. Okay. Now I want you to write two examples of the adverbs which are formed by adding ly and two examples of the adverbs which are formed by using ILY. Come on, write quickly. I want to see your answers. Next. Now, next तरीका क्या है? Qualifying adjective is added to a noun or a pronoun. Okay. एक noun है या pronoun है और उसके आगे qualifying adjective जोड़ दिया गया है. Okay, so how the adverb has been formed? Look at this. Sometimes she visits me. Sometimes कभी कभी वो मेरे घर आती है. Meantime, ये तो बहुत सुना होगा. In the meantime, you prepare yourself for the test. Okay. Otherwise I'll be angry. Right? Yes, that brings me to another adverb. ये देखो, angry. Y के साथ हुआ ना, angry. How does it change? It becomes angrily. Look at the spelling. See, in this way you find that the spelling rules also come into play. So please don't make the spelling errors. Spelling errors, they mar the beauty of the language. You know, they give a very distorted appeal to whatever we are writing. So ऐसा मत करो. Spellings पे भी बहुत ध्यान देना जरूरी है. Okay. Next, ये देखो, somewhat. I have somewhat completed the project. पूरा complete नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत complete हुआ है. Okay. Now another way by which the adverb is formed. कैसे बनता है? Compound words. आपने सुना है compound words?
दो वर्ड जोड़ करके एक वर्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड वर्ड. सो व्हाट हैव वी एडेड हियर? We have taken a noun or an adjective and we have added the article a. For example, देखो, asleep कैसे बनाइए? sleep के सामने हमने लगा दिया अ, तो बन गया asleep. The baby is fast asleep. सुना होगा आपने, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट देखो, away. वे के साथ बना दिया अवे. गो अवे, गो अवे, ठीक है? नेक्स्ट ये देखो अबोर्ड, बोर्ड, अबोर्ड. ओके, अबोर्ड कैसे यूज करेंगे? राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई वांट टू सी द यूज ऑफ अबोर्ड. अन्यू, अन्यू, न्यू के आगे लगा दिया. व्हाट इज न्यू? न्यू इज एडजेक्टिव, इसके आगे हमने क्या लगा दिया? तो क्या बन गया? अन्यू. शी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन वर्क अन्यू. फिर से नए तरीके से, नए तौर पे, शी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन वर्क अन्यू. ओके, एक और वैरायटी होती है. हाउ इज दिस काइंड ऑफ एडवर्ब फॉर्म? कंपाउंड वर्ड्स मेड ऑफ preposition प्लस noun. preposition to, ओके, इन, फॉर, अपॉन, इनके साथ जोड़ करके हमने क्या बनाया? नाउन के साथ जोड़ा. देखो, डे में हमने लगाया, ये था नाउन डे, इसमें हमने क्या लगाया? टू, preposition. तो अब ये क्या वर्ड बन गया? टुडे. टुडे, ठीक है, हमने इसकी बात की थी. yesterday, टुडे. उसके बाद ये देखो बिसाइड्स, साइड्स है और उसके आगे हमने लगा दिया बिसाइड्स. ओके, बन गया ये, क्या बन गया? ये एडवर्ब बन गया. ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली एडवर्ब आता कहां पर है सेंटेंस में? ओके, दिस इज, यू नो, अ टॉपिक विच इज टू बी अंडरस्टूड बाय अस. हमें समझना चाहिए कि किसी सेंटेंस में हम एडवर्ब को लिखें कहां पर. Because I have seen many students use the adverb, they have used the adverb correctly, but they have not understood where to place this adverb. उसको पीछे लगाना है, बीच में लगाना है, शुरू में लगाना है. That is to be understood by all of us. So let us go further in this कि adverb की position क्या होगी? What is the position of adverb? ठीक है? Let's take some example. जैसे adverb of time and manner आपने अभी किया था. adverb of time जिसमें बताया जाता है कब, when did the action take place, और manner मतलब how, कैसे, कैसे एक्शन हुई. सो उन दो जो एडवर्ब्स होते हैं, मैनर के और टाइम के, दे आर लोकेटेड नेक्स्ट टू द वर्ब. वर्ब के सामने उनको लिखना चाहिए. कैसे? देखो, रमेश सिंग्स मेलोडियसली, ये क्या है आपका? वर्ब, ठीक है, और इसके बाद हमने लगाया मेलोडियसली. रमेश सिंग्स मेलोडियसली. इसका एक एग्जांपल ले लो. द बर्ड सिंग्स स्वीटली, ठीक है. सिंग्स क्या है? वर्ब. द बर्ड सिंग्स स्वीटली, ठीक है. अब देखो, नाउ लुक एट दिस सेंटेंस. आई स्पोक टू मीशा टुडे. आई इज द नाउन, स्पोक इज द वर्ब, टू इज द preposition और ये जो है ये है ऑब्जेक्ट. व्हाट इज दिस? ऑब्जेक्ट, ठीक है. इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट. आई स्पोक टू होम, मैंने किससे बात की? सो वो किससे, ठीक है. सो आई स्पोक टू मीशा, दैट इज द ऑब्जेक्ट. और कब बात की? टुडे. आई स्पोक टू मीशा टुडे. सो दिस टुडे इज द एडवर्ब, ठीक है. Look at this another sentence. She gave her a book yesterday. देखो, she is the noun or the subject. ये her, यहाँ पे दो objects हैं. Her भी object है और a book भी object है. She gave her what? She gave her a book. When? Yesterday. ये है आपका adverb. ये क्या बता रहा है? Time, ठीक है. तो adverb of manner और adverb of time कहाँ हमने use किए? After the verb, ठीक है. Next, when two or more adverbs follow a verb, now there is a particular order.
अब आप पूछोगे मैम अगर कई तरह के एडवर्ब आ गए, सो व्हाट डू वी डू? नॉट टू फियर, नॉट टू वरी, देयर इज अ रूल व्हिच गवर्न्स दिस आल्सो. When two or more adverbs follow a verb, there is an order. What is that order? Let's see. First comes the adverb of manner, then comes the adverb of place, and then last में आता है adverb of time. So पहले क्या आएगा? Manner, फिर क्या आएगा? Place, फिर क्या आएगा? Time. You can remember this by using MPT. छोटा सा ये याद कर लो. It will help you. It is like a mnemonic. Okay, छोटा सा acronym समझ लो, इसको कुछ भी समझ लो. M मतलब manner, P मतलब place और T मतलब time. Look at the example. Rama was playing happily there yesterday. Now let us examine this. क्या ये rule follow हुआ या नहीं हुआ? यहाँ तक समझ गए? Rama was playing, ये verb आ गया, ये noun आ गया. Happily क्या है? Adverb of manner. There क्या है? Adverb of place. ये हो गया मैनर, ये हो गया प्लेस, और yesterday क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम. अगर ये तीनों ना हो तो जो भी अवेलेबल हो, जो भी दो अवेलेबल हो, वो ये ऑर्डर लेंगे. लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. ही स्पोक सैडली लास्ट नाइट. ये देखो, ही स्पोक तक तो क्लियर है. सैडली, व्हाट इज दिस सैडली? दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर, और लास्ट नाइट क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम. ठीक है, इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है तो हमने ओमिट कर दिया, कोई बात नहीं. वी हैव टू फॉलो द सीक्वेंस. सो यहाँ पे क्या आ गया? एम और टी. इसका एक एग्जांपल ले लो. देखो, ही विल प्ले वेल टुमारो. यहां तक तो ठीक है. ही विल प्ले, ये हो गया वेल, और ये हो गया टुमारो. वन मोर एग्जांपल ऑफ टाइम, और ये कौन सा है? ये है एडवर्ब ऑफ manner. Now quickly write a sentence. Show me that sentence which shows this order, this sequence. पहले adverb of manner, फिर adverb of place, और नीचे adverb of time. MPT रूल को हमेशा याद रखना. ठीक है? ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि रमा वॉज प्लेइंग देयर yesterday happily. ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं. ऐसा बोल सकते हैं क्या? He spoke last night sadly. नहीं, that is wrong. अच्छा नहीं है, वो गलत है. It's wrong, totally wrong. ठीक है? यहाँ ऐसा बोल सकते हैं क्या? रमा was happily playing there yesterday. तो इस तरीके से सीक्वेंस हमको बिगाड़ना नहीं है. You have to follow this sequence always. ठीक है? अब नेक्स्ट रूल क्या है? Adverbs of frequency are positioned between subject and verb. What is adverb of frequency? Frequency मतलब कितनी बार, है ना? How many times? कब कब? Daily, every day, generally, rarely, regularly, frequently, always. ये सब है adverbs of frequency. कितनी बार? ठीक. तो ये देखिए, look at this. He always arrives at 6 p.m. He always. ऐसे नहीं बोलना है. Always he arrives at 6 p.m. I have seen people saying, always you are late. No, ऐसा नहीं बोलना है. He always arrives. कहाँ कहाँ पे आया? देखिए, ये है सब्जेक्ट मतलब नाउन, और ये है वर्ब. ये बीच में आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में पोजीशन होगा, या उसका प्लेस ये रहेगा बीच में. ये देखिए, शी रेयरली विजिट्स द हॉस्पिटल. ये क्या है? वर्ब, और ये क्या है? नाउन या प्रोनाउन. ठीक है, मतलब सब्जेक्ट. शी रेयरली विजिट्स. ऐसे नहीं बोलना है रेयरली शी विजिट्स द हॉस्पिटल. नहीं, शी रेयरली विजिट्स द हॉस्पिटल. Take the next, some more rules are there which will make it very clear about the position of adverbs, how it is to be used. अब ये देखो, जैसे कुछ verbs होते हैं जिसमें are होता है, am होता है, is होता है ना? आपने पढ़े हैं. am किसके साथ यूज होता है? I. ठीक है? I am a teacher. Okay, I am a gardener. I am a student. are कैसे यूज होता है? You are a good student. Okay, you are my brother. ऐसे are यूज होता है. और ये is कैसे यूज होता है? थर्ड फॉर्म में ये भी यूज होता है. She is a good dancer. He is a good cricketer. ऐसे बोलते हैं ना हम. So इस तरीके की जब आपको सेंटेंसेस, आपको ऐसे वर्ब्स मिले जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलियरी वर्ब. इनको हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलियरी वर्ब. तो ये देखो, ये कैसे यूज होते हैं? ये देखो, यहाँ पे आ गया आर,
ओके, ये आ गया एम और ये आ गया इज. नाउ यू रीड द सेंटेंस. द फ्लावर्स आर, क्या लिखा है? द फ्लावर्स आर वेरी फ्रेश. ओके, ये क्या है? ये क्या है? एडवर्ब. द फ्लावर्स आर वेरी फ्रेश. ये क्या है? आई एम नेवर लेट टू द स्कूल. आई एम नेवर लेट टू द स्कूल. नेक्स्ट देखो, शी इज क्वाइट रॉन्ग. शी इज क्वाइट wrong. Quickly make example sentences and show me. Fast, जल्दी जल्दी लिखो example sentences in the comment below. Okay, लिखो. ऐसे बनाओ, एक बनाओ आर के साथ, एक बनाओ एम के साथ और एक बनाओ इज के साथ. ठीक है, एम के साथ क्या आना चाहिए? हमेशा पहले आई आना चाहिए. ठीक है, ये रूल आप कर चुके हैं पहले. अच्छा, इज के साथ कौन सा आना चाहिए? ही या शी आना चाहिए, या कोई और नाउन आ सकता है ना? ठीक है, जैसे माई स्कूल इज वेरी फार अवे, ऐसे भी आप लिख सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि ही शी आए. एनी नाउन कैन ऑल्सो बी यूज विच इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. सो ये देखो, शी, ये ही शी के साथ आ गया, एक एम आई के साथ ही आएगा और एक और क्या क्या है? आर. ठीक है, आर. आर में यहाँ पे आपको प्लूरल देना है. ठीक है, कोई ना कोई प्लूरल सब्जेक्ट आपको देना है. दिस इज अ हिंट आई एम गिविंग यू. आगे का आप फिल करिए. दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क. Rather, you have to do it now only. कोई होमवर्क नहीं है. This is class work. Alright? यहाँ पे क्या आना चाहिए? We लिख सकते हो आप, they लिख सकते हो आप, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट लिख सकते हो. द स्टूडेंट्स लिख सकते हो, द फार्मर्स लिख सकते हो. ठीक है, द फ्लावर्स लिख सकते हो. एनिमेट ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, बट प्लूरल में होना चाहिए. नेक्स्ट, व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. नेक्स्ट रूल क्या है? जब कोई एडवर्ब, when it modifies an adjective or an adverb, it goes before the modified verb. The word which it has modified, जिसके ऊपर बात हो रही है, उसके पहले आना चाहिए. ये देखो, the juice is very sweet. एक एग्जांपल फटाफट लिखो. The lemonade is very tangy. खट्टा. द लेमनेड इज वेरी टैंगी, है ना, मजेदार, मस्त. याद करो लेमनेड, अभी गर्मी की सीजन में सब बच्चे पियेंगे नींबू पानी और लेमनेड, है ना, याद है? सो द जूस इज वेरी स्वीट, द लेमनेड इज वेरी टैंगी. आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे. टेस्टी, डिलीशियस. ठीक है, अब ये देखो, शी पिक्ड अप द बकेट क्वाइट केयरलेसली. ठीक है, क्वाइट केयरलेसली. शी पिक्ड अप द बकेट क्वाइट केयरलेसली. ये क्यों आया क्वाइट केयरलेसली? क्योंकि इट इज मॉडिफाइंग दिस एडवर्ब केयरलेसली, इसलिए वो उसके पहले आएगा. आप इसकी सीक्वेंस चेंज करके देखो, यू विल योरसेल्फ अंडरस्टैंड. द जूस इज स्वीट वेरी, ऐसे बोलेंगे क्या? ओ मामा, द जूस इज स्वीट वेरी, आई वांट टू ड्रिंक सम मोर, गिव मी वन मोर ग्लास, ऐसे बोलेंगे क्या? नो, द जूस इज वेरी स्वीट. Okay, next. If auxiliaries like have to, need to, used to are used in a sentence, तो क्या होता है उसमें? कहाँ आएगा? जो adverb है वो auxiliary के पहले आएगा. ये देखो, I often, ये देखो, have to, leave early. Often क्या है? Adverb है ये. ठीक है, ये उसके पहले आएगा. ये देखो, used to, she always used to recite prayers. Used to के पहले आ गया always. ठीक है, ये देखो, आई रादर नीड टू बी कॉशियस. आई रादर, ये देखो, नीड टू बी, और ये आ गया इसके पहले, आई रादर नीड टू बी कॉशियस. सो वेरी क्विकली यू राइट 3 सच सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. अपने अपने सेंटेंस बनाओ, अपनी अपनी नोटबुक में लिखो, एंड राइट देम फर्स्ट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन check, I can see these answers, whether you are able to understand or not. And as I already said, if you are facing any query, if you have any doubt, kindly put it up, okay? So that I come to know what is actually bothering you. Now, just as my dear students, we have done degrees of adjectives, है ना? Adjectives में degrees होती हैं, degrees of comparison होती है ना? Similarly, जैसे एक example ले लो wise. Wise is an adjective. Wise, wiser, wisest, ऐसे बोलते हैं ना हम. ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोटेस्ट, स्लोएस्ट, आई एम सॉरी, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट. ऐसे ही एडवर्ब्स के भी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं. पहली जो होता है पॉजिटिव बोलते हैं उसको,
ठीक है, दूसरा जो होता है उसको कंपैरेटिव बोलते हैं, तीसरा जो होता है उसको सुपरलेटिव बोलते हैं। सो एडवर्ब्स की भी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं। लेट अस सी हाउ। यू हैव डन फास्ट, है ना, शी रैन फास्ट, तो इसका पॉजिटिव तो है फास्ट, और जो इसका कंपैरेटिव है वो क्या होगा, फास्टर। ओके, और ये होगा फास्टेस्ट। ठीक है। अच्छा, मच का क्या होना चाहिए, मोर और मोस्ट। केयरफुली का क्या होना चाहिए, मोर केयरफुली, मोर केयरफुली और मोस्ट केयरफुली। शी ड्रोव द व्हीकल मोस्ट केयरफुली। और भी आप बना सकते हैं। गिव मी टू एग्जांपल्स जहां पे मोर और मोस्ट यूज होता हो। गिव मी टू एग्जांपल्स क्विकली। फार, फादर, फारदेस्ट। उसके बाद लेट, लेटर, लेटेस्ट। लेटेस्ट न्यूज तो सबको पता है, हाउ वी यूज लेटेस्ट, सबसे फास्ट, सबसे लास्ट, मतलब सबसे अपडेटेड, और लेटर उसके बाद। वी विल डू द वर्क लेटर, we'll do the work later in the afternoon, this is the latest news। और लेट, ठीक है, देर से। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। she tried harder this time, that is why she was selected। हार्डेस्ट का एक बना के सेंटेंस मुझे जल्दी दिखाओ। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंटली, क्या होगा, मोर फ्रीक्वेंटली और मोस्ट फ्रीक्वेंटली। मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ठीक है। सो इन दिस वे यू फाइंड दैट देयर आर degrees of comparison for the adverbs also। Now coming to the most important subtopic of this session, what is the topic? Correct the following sentences। There are a few sentences, of course, there are certain mistakes or certain changes are to be made to make it sound correct, okay, to make it seem correct, it should be corrected। कैसे correct करना है, तो पहले पता होना चाहिए what is the mistake। Look at the first sentence, last night my father returned lately। अब ये लेटली कोई वर्ड नहीं है यहाँ पे, हमको एडवर्ब चाहिए, ठीक है, व्हाट वी वांट, एडवर्ब। सो ये कैसे लिखेंगे इसको, लास्ट नाइट माय फादर रिटर्न्ड लेट। व्हाट इज द एडवर्ब, लेट। जैसे फास्टली कोई एडवर्ब नहीं होता है, ठीक है, सो लेटली कोई एडवर्ब नहीं होता है। अब नेक्स्ट ये देखो, ही बिहेव कावर्डली बिफोर द प्रिंसिपल। हम बात कर रहे हैं हाउ डिड ही बिहेव, है ना, कैसे, मैनर, हाउ डिड ही बिहेव, तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा टू मेक इट करेक्ट, ही बिहेव्ड इन अ cowardly manner before the principal। In this way this will be corrected। he behaved cowardly, nahi, he behaved in a cowardly manner before the principal। okay, अब ये देखो, please kindly help me in my work। what is the mistake here, we should not use these both together। either we say please help me in this matter or kindly help me in my work। now there you can follow a simple rule। if you are talking to your friends, your peer group, you can say please help me in my work। if you are talking to somebody elderly, somebody okay senior, so आप क्या बोलेंगे वहां पर, kindly, kindly help me in my work। दोनों को एक साथ नहीं बोलना है। he is too handsome, this is very important। अब इसमें गलत क्या है, टू का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, हम ये हैंडसम की बात किस कॉनोटेशन में कर रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं वी आर हैप्पी टू से दैट ही इज वेरी हैंडसम, राइट।
सो अगर हम टू बोलते हैं इट शोज अ नेगेटिव फीलिंग, जैसे वो रादर और फेयरली बताया था, यू रिमेंबर, रादर इज फॉर नेगेटिव मीनिंग एंड फेयरली इज फॉर पॉजिटिव मीनिंग। सिमिलरली हमको यहाँ क्या बोलना है, वी हैव टू से ही इज वेरी हैंडसम, हमको ऐसा बोलना है। देखो, हैंडसम, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, वाइज, लविंग, ये सब पॉजिटिव क्वालिटीज हैं। सो हमें क्या बोलना है, ही इज वेरी हैंडसम, टू नहीं बोलना है। नाउ टेक वन मोर एग्जांपल, थोड़ा सा डिटेल है बट यू विल बी हैप्पी टू लर्न इट। अगर मैं कहूं द वेदर इज टू हॉट, मतलब आई एम नॉट हैप्पी विद द हीट, आई एम नॉट हैप्पी विद द टेम्परेचर। लेट्स टेक इट फर्दर, इसको और समझाती हूँ मैं आपको। द वेदर इज टू हॉट टू गो आउटसाइड, मतलब क्या हुआ, इट इज सो हॉट टुडे दैट वी कैन नॉट गो आउटसाइड। कैन नॉट मतलब निगेटिव आ गया ना, सो टू को कहाँ यूज करना है, नेगेटिव सेंस में। अगर हम किसी की तारीफ करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू प्रेज एनीबडी, वी शुड नेवर से टू, वी शुड से वेरी। ही इज वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, शी इज सो वाइज, या शी इज वेरी वाइज। हमें ये नहीं बोलना टू वाइज। टू कब बोलते हैं हम, व्हेन वी आर लुकिंग डाउन अपॉन, है ना, जब हम उसको नीचे कर रहे हैं, व्हेन वी आर नॉट एक्चुअली प्रेजिंग, when we are condemning, तब हम to बोलते हैं। प्लीज पे अटेंशन टू दिस। अब ये देखो, आई विल बिहेव पोलाइट, क्या होगा इसका आंसर, आई विल बिहेव पोलाइटली। ये ईली लगाना पड़ेगा ना, पोलाइट के बाद ली लगाना पड़ेगा ना, आई विल बिहेव पोलाइटली। पोलाइटली इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ विल आई बिहेव, रूडली, नो, आई विल बिहेव पोलाइटली। अब ये देखो, यू हैव टू रीच द मॉल एट 6 p.m. शार्पली, शार्पली पहुंच जाना, 6 बजे शार्पली पहुंच जाना। ओके, क्या बोलना है हमको, वी हैव टू, यू हैव टू रीच द मॉल एट 6 p.m. शार्प, ऐसे बोलना है। दिस इज द एडवर्ब। शार्पली एडवर्ब नहीं है, सिंपली बिकॉज वी हैव पुट एल वाई, यहाँ पे वो नहीं लगेगा। व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट या स्पीक, द प्रोग्राम विल स्टार्ट एट 8 p.m. शार्प। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट, ऑलवेज शी इग्नोर्स मी। ऑलवेज, ये कहाँ आएगा ऑलवेज, ये आएगा नाउन और वर्ब के बीच में। शी ऑलवेज इग्नोर्स मी, ठीक है, शी ऑलवेज इग्नोर्स मी आएगा। नेक्स्ट, द कॉफी इज इनफ स्वीट। नाउ यहाँ पे देर इज अ स्मॉल ऑब्जर्वेशन विच वी हैव टू मेक हियर। जब हम इनफ बोलते हैं कभी भी, इनफ का मतलब क्या है, टू सम एक्सटेंट, काफी, काफी। कॉफी काफी मीठी है, हम ये कहना चाहते हैं, व्हाट डू वी वांट टू से, कॉफी काफी मीठी है ना। तो इसको कैसे बोलना चाहिए हमें, हाउ, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इट, द कॉफी इज स्वीट इनफ। ठीक है, ये जो इनफ है, दिस विल गो हियर, यहां चला जाएगा। द कॉफी इज स्वीट इनफ, ये ध्यान रखना, जब वी हैव टू यूज इनफ, इट गोज एट द बैक ऑफ द नाउन, या जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, इनफ पीछे चला जाएगा। सो दीज आर सर्टेन observations which we have to make, certain rules which we have to follow. Okay, and now very important, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवा जाती सिल पर परत निशान। तो क्या करना है हमें, यस, क्या करना है बताओ, वी हैव टू डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब हमें कुछ प्रैक्टिस करनी है, कुछ असाइनमेंट लेने हैं, है ना। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वी विल नेवर नो व्हाट आर आवर मिस्टेक्स, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आई वांट यू टू करेक्ट देम, दे हैव सम एरर्स। आई कैन आल्सो रीड आउट फॉर यू, so that you have some idea कहाँ मिस्टेक हो रही है। Let's see if you can guess it correct or not. She ran very fastly. Mr. Reddy is working very hardly on this project. The patient is very better today. He is very fat that he cannot walk. Here I would like to give you a clue. He is very fat. इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, रिप्लेस कर दो टू से। ओके,
ही इज टू करके बनाओ एंड लेट मी सी क्या याद रहा, कुछ आया कि नहीं. आई नो आई हैव नॉट टेकन इट बट आई जस्ट वांट टू सी अबाउट योर अवेयरनेस लेवल. आई वांट टू चेक इट कितनी अवेयरनेस है. दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू अ हिंट. यहाँ पे टू लगा के इस सेंटेंस को मॉडिफाई करो. नाउ ही केयरफुली डज हिज वर्क. रेयरली आई विजिट द म्यूजियम. वी जंप वेरी हाईली. So these sentences are to be checked by you, are to be corrected by you. You have to see where the error is. If is it related to the position? What is the error related to? Okay, and you have to write these in the corrected manner because this type of questions, appears, I mean to say, in the competitive exams, whether it is of army, whether it is of bank, whether it is of any level, certain corrections are there. There is a part of the sentence, there is a phrase, there is a particular portion in which there is a mistake. So what is that mistake? It can be related to adverb also. है ना? So try to find out what mistake is being shown here and how do you correct it. And if you face any trouble, as I already said, do connect, do join, leave your comments. We'll be happy. Drop your comments and find out the actual answers and get back to us, dear students. So in this way, you find that you have reached the end of the session and we'll be more than happy to help you if you can connect to us and tell us which are the other topics wherein you might find you find some difficulty and you find more help you require, and then wait for some more topics which are already lined up, which are already scheduled. They'll come up. And you can also request for those areas, your gray areas, where you really feel that you want some improvement, dear students. So we at Super Grads from Top Rankers will be pleased, happy, and motivated to help the student community. Thank you. So God bless you all. More power to you. Keep learning, keep growing, keep enhancing your and broadening your horizons. God bless.